गुड इवनिंग टू ऑल। सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है वन मार्क सोल्यूशन। एंड आपको पता है कि लगातार वन मार्क सोल्यूशन के इस प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट चैप्टर्स के वन मार्क क्वेश्चंस के वेबिनार कंडक्ट कराए जा रहे हैं। हमारे साथ हर वेबिनार के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आज हमारे साथ जो आज हम डिस्कस करने वाले वो हैं चैप्टर 10 फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के लिए, और चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। सो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर का नाम है, चैप्टर 12 है, और हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 के बारे में। हमारे साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में उपस्थित हैं प्रवीण कुमार मिश्रा जी। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको पता है कि प्रवीण सर इससे पहले भी हमारे साथ कई वेबिनार कंडक्ट कर चुके हैं, और आज ये वेबिनार जो है ये तीसरा वेबिनार है प्रवीण सर का चैप्टर 10 लेकर के। ये आज हमारे साथ हैं। आज चैप्टर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स से संबंधित जो वन मार्क के जो क्वेश्चंस हैं, ही इज गोइंग टू डिस्कस द वन मार्क क्वेश्चंस लाइक ओटीक्यू, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड assertion रीजन क्वेश्चंस, etc. So all type of one mark questions which is asked in CBSE board examinations as well as in the home examination as well as in the different type of competitive examination. तो सर आज हमारे साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 के बारे में। प्रवीण सर इज वर्किंग एज पीजीटी फिजिकल एजुकेशन इन स्वामी नारायण विद्यापीठ, आनंद, गुजरात. He has very long experience and also have research experience, also have presented so many papers in national and international conferences, international webinars, seminars, and have written many articles related to the sports. So I would not take much time. I would like to hand over the platform to Praveen sir. Praveen sir, please. Thank you so much, sir. Professor, thank you. I once again thank you to One Mark Solution Question to give me a chance to present a uh, to present a paper, to present my presentation in training in sports. Uh, in class 12, the training and sports is one of the most important chapter. Is there in board exams? Training and sports maximum questions, 8 to 10 marks questions. There every year's coming in. Now, basic information for training and sports. If you learn physical fitness components in 11th class, there is 5 different physical fitness components are there: strength, speed, agility, flexibility, endurance, and cognitive abilities. अगर आप देखने जाएंगे तो इन सब का डेवलपमेंट इसमें दिया हुआ है ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स. Now, in my presentation, it divided into 4 different parts: objective, assertions, and assumptions, match the columns, and last fill in the blanks. Now, first we start objective type of questions. Now, first question is the aim of sports training. What is the aim of sports training? Improvement in physical fitness, improvement in technical skills, improvement in tactical skills, and gaining the top performance in the competition. If you've seen in Olympics, Asian Games, Commonwealth Games, these are the competitions which are coming on every 4 years, and the top performance maintain karna, it is a difficult task from each and everyone. Now, the sports training, the basic components is physical fitness development. After that, technical trainings, then tactical trainings, and including these 3, if you are developed properly, now performance is gone to up or top performance. Now the answer is gaining of top performance in competitions. Isometric, first part is strength. Now strength is ability to overcome the resistance or act against resistance. It is called as strength. Now strength के 2 different types हैं, static and dynamic. Now static strength के अंदर हम आता है isometric exercise. Now isometric exercise, one in which muscles length is constant होता है, shortened होता है, lengthened होता है, या फिर none of above. Now isometric contraction वो contractions होते हैं जहां पर muscles जो lengthen होता है वो range of movements होते हैं, या lengthening होता है वो shorter है, वो constant नहीं रहते हैं, वो एक common रहता है. For example, if you lift that weight hanging on a bar, these are the example for isometric exercise. Now the answer is constant. The name of the ability which helps to overcome the resistance with speed is known as maximum strength,
Explosive strength, strength endurance, yeah, static strength. Maximum strength means uh, one time lift karna hai. It is ability to overcome the resistance in single contraction. It is called as maximum strength. Strength endurance, ability to overcome the resistance at under the condition of fatigue. And static strength, it is a type of isometric contraction. Now the answer is B, explosive strength. Now isometric method of training was introduced by, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? G.D. सोंदी ने, J.J. Perrin ने, हिपोक्रेट्स ने, Hittinger and Mullers ने. G.D. Sondi is a uh, IOA president, Indian Olympic Association president. J.J. Perrin is developed isokinetics. Hippocrates, one type of psychologist. Now the answer is D, Hittinger and Mullers. इसने इसको isometric exercise को develop किया. Now basically isometric method को develop करने का best period of time is कि competition से 1 or 2 month पहले, I'm telling you Olympics, 1 or 2 month पहले isometric exercise करना चाहिए. For example, कोई भी weight लेके one time resistance exercise करना चाहिए, या कोई भी एक heavy weight ले. One of the biggest example is tug of war. Now, in which year isometric exercise is introduced? 1951, 1952, 53 and 54. Now, Hittingers and Mullers ने कब इसको डेवलप किया? 1953 में फर्स्ट टाइम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को डेवलप किया गया कि अगर हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स को एक कांस्टेंट लेवल में रेजिस्टेंस कर सकते हैं. इट इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. हमारा यहाँ पर लेंथ चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट पैरामीटर्स पे रहेंगे. Now, what do you mean by iso and metric? Now first option is iso means constant and metric means length. Now iso means change, metric means size. Iso means constant and metric means velocity, speed. Now iso means size and metric means constant. Now अगर हम आंसर देखने जाएंगे, now iso means constant and metric means length. हमें पर्टिकुलर लेंथ में कांस्टेंट वर्क कर रहे हैं. इट इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. नाउ आंसर इज ए. नाउ Cybex machine is based on the principles of isometric contractions, isotonic contraction, isokinetic contraction, or none of above. कोई नहीं है इसमें. Now what is Cybex machine? Cybex machine, it is particular designed by basically on isokinetic exercises, isokinetic contractions के लिए इसको बनाया गया. Now what is the particular reason? Particular reasons means यहाँ पर range को improvise किया था, change किया था. For example, if you see in treadmills में क्या होता है कि जो range है उसको time to time या duration के according उसको change होते हैं. For example, first runner should run on 6 speed, 7 speed, 9 speed, and duration should be on fixed. That is called as Cybex machine. Cybex machine means according to your range, it should be on changeable. According to your strength, according to your particular development, group of muscles development, it should be on changes. Isokinetics. Next type is, first is isometric. Next type is isokinetics. What is isokinetic method of training was introduced by किसने इसको develop किया? De Long ने, J.J. Perrin ने, Aristotle ने, या Hippocrates ने? Now the answer is De Long is developed by isotonic. Aristotle is one of the philosopher for psychologists. Hippocrates is one of the philosopher for psychologist. Now the answer is J.J. Perrin. J.J. Perrin ने first isokinetic machines को develop किया. Now next, in which year isokinetic exercises are introduced? कौन से year में isokinetic exercise introduce हुआ? 1965, 1966, 1967, 1968. Now the answer is 1968 में J.J. Perrin ने first time isokinetic machines को develop करना चालू किया, or it should be on developed. What do you mean by isokinetic exercise? Same length में वर्क करना, same speed में, और same range में, and same movement पे. Now the answer is same speed में. If you run in six grade
or in a 9 minutes, that is called as same speed training. If you lift on 10 kg on 10 times repetition, it is called as isometric exercise, isometric exercise. Now next is isotonic method. Third methods to develop strength. Who developed the isotonic methods of training was introduced by DeLong, J.J. Perrin, Aristotle, Hippocrates. Now the answer is DeLong. DeLong ने first isotonic exercise को develop. What is the isotonic exercise? Isotonic exercise, those exercises where the muscles are contract and relax in the same form of exercise. In the same form of exercise में muscles same contract होते हैं and same relaxations होते हैं. Now, in which year isotonic exercises introduced? 1942, 1943, 1944, 1945. Now the answer is 1945 में first DeLong ने इसको develop किया. What do you mean by isotonic exercise? What do you mean by isotonic? Constant range of motion, change of motion, size of motion, now total range of motion. Now the answer is constant range of motion. When we work on constant range of motions, now the contraction and relaxation, eccentric or concentric movements are coming. For example, if you are doing in cycling, or if you are doing in running, now the one muscles are contract and other muscles are relaxed. If in a cycling, leg muscles, quadricep muscles are contract and other hamstring muscles are relaxed. But in backward movements, it's come on hamstring are contract and quadricep muscles are relaxed. It is called as isotonic exercise. Now the isotonic exercise is determined on the base of intensity of your work, rate of doing of your work, and total number of repetitions and total duration of your work. Its four basic components isotonic exercise are determined. Because why it is determined? Because only that isotonic exercise it developed contraction and relaxation form. Which one of the following method used to develop endurance? Now next part is endurance. Continuous training methods, interval training methods, fartlek training methods, all above, सब इसके अंदर आते हैं. Now which of the following methods are used to develop endurance? The rate of doing work in normal, in simple to in a low to moderate intensity under the condition of fatigue or tiredness, it is called as endurance. Now continuous, interval and fartlek training, all these comes on endurance training methods. ये सारे ट्रेनिंग मेथड्स, कंटिन्यूअस इंटरवल एंड fartlek ट्रेनिंग मेथड, ये सारे के सारे एंड्योरेंस मेथड्स को डेवलप करने के अंडर दी कंडीशंस में आते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड्स इन एंड्योरेंस? कितने टाइप के कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं? 2 स्लो एंड फास्ट, 3 स्लो फास्ट एंड वेरिएबल पेस, केवल 2 जॉगिंग एंड साइकिलिंग, एंड ओनली 1 स्विमिंग. Now the answer is slow, fast and variable pace. Slow, fast and variable pace में it determined on the duration of work. आप कितना देर वर्क कर रहे हैं first. Secondly, आपकी metabolic rate means कि आप aerobic form of activities कर रहे हैं और anaerobic form of activities कर रहे हैं. अगर आप if you are doing a work in a fast means up to last on 20 minutes, it is called as anaerobic form of activities. Now your heartbeats goes on up to 120, 140 to 160. Now, in the same manner, variable pace are also there. Variable continuous training methods also there. Now, it is a combination of slow and fast. If you see, slow and fast means it is metabolic rate is aerobic plus combination of anaerobic. Means your work should be on start from 0 to 60 minutes. 60 minutes तक आप work कर सकते हैं इसमें with the combination of slow and fast method. Now, the heartbeat goes up to 120 to 160 beats per minute. Means जैसे 120 आएगा, again you start your training on the basis of your fast training methods. Now weight training methods was introduced by German gymnast coach in which year? Is 1810, 1812, 1820
and last is 1816. Now the answer is 1812. John Basido Bernard, one of the gymnastic coach, they are using the weight training programs, specific weight training programs for their gymnastics. जर्मन एक फिजियोलॉजिस्ट था जिसने जॉन बेसिडो बेर्नार्ड एक वन ऑफ द फिजियोलॉजिस्ट जिसने वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स बिकॉज जिम्नास्टिक्स के लिए शोल्डर स्ट्रेंथ एंड लेग स्ट्रेंथ मसल्स दे आर रिक्वायर्ड ऑन योर बॉडी स्ट्रक्चर्स फॉर डूइंग देयर जिम्नास्टिक्स वर्क. Now physical exercise is done with an aim to develop their muscle hypertrophy are by the nature. What is the muscle hypertrophy? Means enlargement of your muscle group. एक particular group of muscles को hyper means the size of your muscles group है उसको increase करना. How it developed? Isokinetic exercise, aerobic form of activities, anaerobic form of activity, isotonic. Now the answer is anaerobic. Anaerobic form of activities, those activities where the oxygens are absent. When the oxygens are absent, now the demand of oxygens of particular group of muscles is more, and when the demand of oxygens more, now the chances, now the group of muscles hypertrophy should be improved, or the nature of activities it should be determined. What type of physical activities you are doing, what type of muscles it involved during the activities, either weight training, either cycling, either jogging, either fast running, either weight training, a particular group of weight trainings. Now the muscle hypertrophy is increased on the form of anaerobic. Anaerobic means it should be on absence of your oxygen. Which physical fitness component is developed to fit fartlek training methods? Fartlek training methods, one type of endurance training methods है जहां पर fartlek training methods को develop किया जाता है. Now what is a fartlek training method? We will discuss later on. Flexibility, strength, endurance, stamina. Now the answer is endurance. Fartlek training methods it should be one type of Swedish training methods है जो surroundings में किया जाता है in form of aerobic as well as anaerobic form of activities. Now what they developed endurance because ये सारी activities under the condition of fatigue होती हैं. Now fartlek training methods was first advised and adopted by which country? USA, Sweden, England, and Switzerland. Now the answer is Sweden. One of the physiologists fartlek training methods is developed. What is the meaning of fartlek? Fartlek meaning is speed play, running, walking, jogging. It includes on the fartlek training method. ये सारा surroundings में होते हैं. That's why it is called as fartlek training method. Or one of the Perloff, Einstein, one type of scientist is there. Physiologists are there. They develop fartlek training methods. Now, best reasons for doing the fartlek training methods is to develop endurance. कौन सा best season है जहां पर हम fartlek कर सकते हैं? Racing, transition period, competition period, off season period जहां पर हम कोई competition fight नहीं करते हैं. Now the basic answer is off season periods. Racing periods means it is a competition type of periods. Transition period जहां पर हम slightly trainings करते हैं. Competition type of period जहां पर हम any particular type of competitions करते हैं. Off season means we are on rest form. We are not doing any trainings, any transition periods. It is now the answer is off season period. In what type of aerobic fitness is achieved through the participation? कौन से एरोबिक एक्टिव फिटनेस है जहां पर हम अचीव कर सकते हैं पार्टिसिपेशन का? स्विमिंग, सर्किट ट्रेनिंग, शॉर्ट स्प्रिंट्स, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. नाउ द आंसर इज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. व्हाट इज द एरोबिक? एरोबिक मीनिंग इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जहां पर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन वेरी लेस रहते हैं, काफी देर तक वर्क कर सकते हैं. डिमांड ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर कम होती है तो नेचर ऑफ एक्टिविटीज भी हमारी बढ़ जाती है. डिमांड ऑफ क्योंकि हमारा ऑक्सीजन कंजप्शन कम होता है इसलिए मसल्स में कंजप्शन ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होने के कारण हम काफी देर तक वर्क कर सकते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल इज मैराथन, फॉर एग्जांपल इज फुटबॉल, इट इज 90 ड्यूरेशन ऑफ वर्क. फॉर एग्जांपल इज हॉकी, इट इज 75 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ वर्क. Who introduced fartlek endurance training methods? किसने इसको डेवलप किया? DeLong, J.J. Perrin, Aristotle, and Dr. Perloff Einstein.
Now Dr. Perloff Esten ने first इसको develop किया. Perloff Esten is belong to Sweden, and he developed a combination of training aerobic and a form of anaerobic. Means जब प्लेयर थक जाते हैं तो वॉक करने लगते हैं या सिंपल जॉगिंग करने लगते हैं या सराउंडिंग्स में ट्रेनिंग करने लगते हैं. Now the basic answer is Dr. Perloff Esten, who developed by the interval endurance training methods. Interval training methods: DeLong, J.J. Perrin, Dr. Perloff Esten, or Dr. Hans Rendiner and Dr. Valdemar Glaciers. University of Fairbanks name, both are there. Dr. Hans Rendiner and Dr. Valdemar Glaciers. They have developed the interval type of training methods. Interval training methods on the basis of your incomplete type of recovery. Incomplete type of recovery where the heartbeats main determine it. Interval training methods basically on intensive or extensive, means when it's 60 to 90%. Interval training methods it's work. The ability which is helpful to maintain the maximum speeds for a long time: reaction ability, locomotion ability, speed endurance, or movement speed. Now the answer is locomotor abilities. One of the example is 200-meter runs. Because the curve in a track, the curve are there, and curve में हमारी body को कैसे maintain कर पाते हैं और हमारी speed को कैसे control कर पाते हैं, this called as locomotor abilities. Now how many type of the pace run methods? First two, even and uneven. Second, isotonic, isometric, and isokinetics. Third one is two, fast and slow run. And last is jogging and cycling and running. Now the answer is A. Two types, even and uneven pace. Pace run means कि हमारी pace को कैसे हम run करते हैं. There is two type of pace run methods are there, even and uneven methods. If you run in 800 meters, now the one player should be run on slow and fast. Slow and fast, it is called as uneven. Or one player is run on constant speed in 2 rounds in 400-meter track. It is called as even pace run. In a sprint race, the most important factor is leg power, heart size, leg length, the type of muscle fibers. Now the answer is determined on the muscle fibers. Muscle fibers is basically determined. Muscle fibers is basically determined on the muscle biopsy. Muscle biopsy is one of the tests. One of the tests we are taken. One of the taken by the person. It should be on a slow or it should be on fast. It should be on white or it should be on white and it should be on red. अगर आपके पास white muscle fibers है और red muscle fibers हैं, तो आप slow करेंगे, slow endurance type of training करेंगे, fast type of training means speed type of training करेंगे और combination type of training करेंगे. ये सब मसल बायोप्सी टेस्ट के थ्रू किया जाता है और वहां पर मसल फाइबर्स को डिटरमाइन किया जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ मसल फाइबर्स यू हैव. नाउ सबसे पहले चाइना एक ऐसी कंट्री थी जहां पर से मसल बायोप्सी के थ्रू उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करना चालू किया. नाउ मसल बायोप्सी में उन्होंने क्या किया कि जो लोअर क्लास के पर्सन होते हैं, चाइल्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल 6 ईयर 7 ईयर 8 इयर्स के प्लेयर्स को उन्होंने लिया, दे आर टेकिंग दैट टेस्ट एंड टेस्ट लिया उन्होंने मसल बायोप्सी करना. वहां पर उन्होंने कंटेंट चेक किया कि उसके बॉडी में फास्ट है कि स्लो है, एंड दैट टाइप ऑफ मसल फाइबर्स दे आर. टेस्ट में उन्होंने पाया कि अगर फास्ट है तो उसको जिम्नास्टिक्स में रखना है, कि उसको एथलेटिक्स में रखना है, कि उसको फुटबॉल रखना है, कि उसको टेबल टेनिस में रखना है. नाउ चाइनीज जिम्नास्ट जो होते हैं वो एट द एज ऑफ 11 से लेके 14 तक they won that gold medal in Olympics because that type of training they are given on the basis of the testing their muscle biopsy and they identify what type of muscle fibers they have. In what way acceleration run should be measured? हम कैसे acceleration run को measure कर सकते हैं? Distance and timing के basis पे, duration के basis पे, heart beat के basis पे, respiratory rate measure करके उसके basis पे. On the basis of distance and on the basis of time, acceleration runs means that ki one person should be on stand on stationary positions, and on the basis of a stationary position we are given there some distance
You run on 60 meters, and 60 meters according to your, we are taking your timings. In the same reverse form, we are given that 6 seconds, and how much 6 seconds they covered that distance. On the basis of accelerations, it should be on developed. Now, ability to execute the motor action under the conditions in maximum possible time is called flexibility, agility, endurance और speed. It is called as speed. हमारी बॉडी में हम कितने मिनिमम पॉसिबल टाइम में हम कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हैं. It is on the basis of different motor action. It is called as speed. One of the biggest example is 110-meter hurdles, because they are doing that movements and they are doing the some motor actions, because there are 10 hurdles in between that there, and they are running and then jump, running and then jump, and on the basis of this they are taking some good timings. In which of the following methods is helped improving their flexibility? Plastic is static stretching methods, dynamic stretching methods, and all above. Now the answer is all above. All above. Flexibility is the range of movements between the two joints, two ligaments, two tendons, or two bones tendency. Now all the plastic methods, static stretching methods, slow stretching methods, dynamic stretching methods, both are coming as a development of their flexibilities. The ability which helps to movement with a greater range, it is known as endurance, strength, flexibility, speed. Now the answer is flexibility. Any movements in a form of greater range, it is called as flexibility. कोई भी ऐसे movements हो जहां पर हम range को improvise कर रहे हैं and develop कर रहे हैं, it is called as flexibility. It may be static, it may be dynamic, it may be passive, it may be active. ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जहां पर हम फ्लेक्सिबिलिटी के रेंज को बढ़ाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओन, मतलब कोई एक पर्सन खुद भी रेंज बढ़ाता है या कोई विद द हेल्प ऑफ एनी पार्टनर्स और विद द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जांपल थेराट्यूब्स, फॉर एग्जांपल स्विस बॉल्स, फॉर एग्जांपल मेडिसिन बॉल्स, जहां पर रेंज को हम इम्प्रोवाइज करते हैं, रेंज को हमारी बिटवीन द टू मसल्स और टू जॉइंट्स को हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स, different range of movements. On the basis of flexibility, it should be improved. Every games and sports flexibility is must needed, because there is no chance if you have full flexibility, now the chances of injury is very less. Now ability which helps to change on the spot and predefined defined movements, differentiations, couplings, rhythmic adaptation. Now the answer is adaptation. How we adapt their adaptation to their movements. In cognitive abilities, there are 7 different type of movements are there. There are 7 different types are there, and one of the type is adaptation ability. For example, if you are in gymnast, they are running and they land in both the legs. In last last Olympics, Deepa Karmakar is there. One of the athletes are there in the board. They are just count on 4th position on the basis of they are not balancing in both the balancing on their both the legs. And if they determine, if they adapt their abilities, if they change their abilities, definitely they will win that medals. Now ability to help to make harmony amongst the different body parts and their related movements, reaction ability, adaptation ability, differentiation ability, balance ability. Now the answer is differentiation ability. हमारी बॉडी को डिफरेंट मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग चेंज अप करना, इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन एबिलिटीज. If you seen in cricket, Mahendra Dhoni 6 hitting that 6 in different styles. If you seen is Virat Kohli, they are hitting a 6 in different abilities, hitting a 6 in different styles. Means techniques is same, but adaptation process or different styles in adaptation is different. आप कैसे उसको improvise करते हो depends upon your differentiation abilities. Which of the following is not the type of cognitive abilities? Handling ability, coupling abilities, balancing abilities, reaction abilities. Now the answer is handling ability. There is 7 different types of cognitive abilities are there: coupling, balancing, reactions, adaptation.
differentiation ability. Including this, there are seven different types are there, and handling it is not a type of cognitive abilities. How many types of the cognitive abilities? 4, 5, 6, 7. I already discussed there are the 7 different types of cognitive abilities are there. In which ability of player to move the physical organ in order to perform? Coupling abilities, balancing abilities, reaction abilities, different abilities. Now the answer is coupling. हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं, इट इज कॉल्ड एज कपलिंग एबिलिटीज. यानी एक साथ दो बॉडी पार्ट्स कैसे मूव आउट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज कपलिंग एबिलिटीज. मैंने अभी आपको दीपा कर्माकर का एग्जांपल दिया. आई एम गिवन दैट वन ऑफ द एग्जांपल इज स्विमिंग. In swimming, diving is the one of the biggest example in coupling abilities. When we dive, our body parts कितने डीप जाता है on the basis of we are given that points. In a long jumps, if our body parts, upper body and lower body comes together, अगर वो comes together नहीं आएंगे, we fall. तो our body क्या होगी, back side movement हो जाएगी on the basis of clock anti-clockwise movements. तो now the chances of जो measurement होता है वो body parts के near होता है. It is called as coupling abilities. Now next is assertion, and next part is assertion and reasons questions. Now first assertion question is, for the improvement of the performance in long distance running, continuous training methods is effective. Now continuous training methods of training improve basic endurance. Now अगर आप देखने जाएंगे reasons assertion से मैच करता है पहली चीज, या assertion reason से मैच करता है. ना इसमें continuous training methods जो पार्ट है वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का पार्ट आता है. और कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स, अगर हम कंटिन्यूस रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में एंड्योरेंस पार्ट भी डेफिनेटली डेवलप होता है. Now endurance is we have to run under the condition of fatigue in a prolonged period of time. Prolonged period of time means up to 2 hours. 2 hours से ज्यादा भी हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो वो कंटिन्यूस ट्रेनिंग का पार्ट आएगा. Now कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड क्या एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के अंदर आता है? Now it is right only, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के अंदर ही आता है. Now already we have to discuss किया हुआ है हमने कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर there is 3 different type of ट्रेनिंग मेथड्स आते हैं, स्लो, फास्ट एंड वेरिएबल पेस. एंड ये तीनों मेथड्स मिला के एंड्योरेंस कोड डेवलप करते हैं. नाउ इसमें कोड बोला है, व्हिच ऑफ द कोड इज फाइनल? बोथ assertion and reasons are true and reasons are correct. एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, जो हमने reasons का एक्सप्लेनेशन दिया वो बिल्कुल सही है. ऐसा ना assertion and reasons are true, but the reasons of correct explanations are wrong. Now assertion are true but reasons are false. Assertion are false and reasons are true. Now the answer is A. Assertion and reasons are true, वो दोनों सही हैं. जो reasons का explanation है वो भी correct form में. Now next is assertion is strength of movement produced by the muscles depends upon how the close to the joint is attached. Now reasons क्या बोलते हैं? Muscles is attached in further way to produce the powerful movements from one attached to the near joints. Now यहाँ पर assertion wrong है, क्योंकि यहाँ पर strength का movements जो बोला है वो joints से related बोला गया है. And muscles should be attached according to your joint, near to the joint. हम कोई भी particular activities करते हैं, यहाँ पर joints और मसल की स्ट्रेंथ दोनों डिटरमाइंड होती है. और कोई भी स्ट्रेंथ वाले मूवमेंट्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पुशअप्स मार रहे हैं, पुलअप्स मार रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स को ही डेवलप करते हैं और जो हमारे जॉइंट्स में भी हम फॉल करते हैं. अभी मैं जॉइंट्स का पार्ट नहीं लूंगा क्योंकि जॉइंट्स का टॉपिक इट इज टोटली डिफरेंट है. इन competition are indispensable for enhancement of the sports performance, but competitions are provide their opportunity to the individual to prove his physical and psychological ability. Now the answer is right. Now the answer is A होगा इसमें. assertion और assertion are true and reasons are जो explanation बोला वो भी true. How? हमारी जो बॉडी में
फिजिकल और साइकोलॉजिकल एबिलिटीज होती हैं वो एक कॉम्पिटिशन को डिटरमाइन करते हैं, वो एक फर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन every teams a one physical trainers are there and one psychological trainers are there. Why they are hiring this type of people? क्यों उनको हायर करते हैं? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस को एक कंट्रोल कर सके, एक मेंटेन कर सके, इसलिए वहां पर एक फिजिकल ट्रेनर एज वेल एज साइकोलॉजिकल ट्रेनर भी यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस होते हैं उनको इनहेंस कर सके, उनके परफॉर्मेंस को लोअर से लेके एकदम हायर तक इनहेंस ले जा सके, इंप्रूव करा सके. In initial stage of training, group training are used to ensure the optimum use of the training. Training facilities are the large number for athletes. For elite sports person, individual training plans cannot ensure the optimum development of the performance and prerequisite. Enhance the group plan became their necessity. Now, reason जिसमें बोला गया है, फर्स्ट एजर्शन क्या बोला है? एजर्शन बोला है कि कोई भी ग्रुप ट्रेनिंग प्लान्स में हमें एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड होना चाहिए फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एथलीट्स गेम. यहाँ पर टीम गेम्स के बारे में बोला गया है. टीम गेम्स में पर्संस को ग्रुप ट्रेनिंग का जब कराते हैं तो वहां पर एक लार्ज इक्विपमेंट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज होना चाहिए. बट सेम रीजंस में क्या बोलता है? रीजंस में ऐसा बोला है कि ट्रेनिंग प्लान्स आर कैन नॉट बी एंश्योर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीरिक्विजिट and enhance the group planning became their necessity. It is not required. एक ग्रुप प्लान्स के लिए हमें कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग बनाने की या कोई इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा रीजंस में बोला गया है. Now it is reasons are wrong and जो assumption बोला है वो राइट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल हम फुटबॉल के लिए प्लेयर्स बना रहे हैं, हॉकी प्लेयर्स के बना रहे हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स के बना रहे हैं, वॉलीबॉल प्लेयर्स के ट्रेनिंग प्लान बना रहे हैं, तो इट शुड बी ऑन ग्रुप फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग. When we plan on 4x400 meter running for each athletes, तो वहां पर ग्रुप प्लान बनाने, वहां पर इंडिविजुअल प्लान्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं. Now next part is match the column and question. Match the columns questions. Now यहाँ पर weight training methods, interval training methods, continuous training methods and plyometric training methods. Now next अगर आप list 2 में देखेंगे तो speed endurance, strength, power and basic endurance. Now, what they are developed? What training? Weight training should be developed on strength. Interval training methods should be developed on speed endurance. Continuous training methods should be developed on basic type of endurance. And plyometric training method should be developed on power. Now, the answer is B. Answer is A. Means weight training is strength में है. Now, interval training method should be on speed endurance. Now, continuous training method should be on basic form of endurance. Plyometric should be on develop on power. Now circuit training methods, footwork training methods, interval training methods and pressure type of training methods. Now circuit training methods one type of training है जहां पर एक सर्कल फॉर्म में एक ट्रेनिंग किया जाता है. This year circuit training methods eliminated our chapters, but I included from only small point for training methods developing. सर्किट ट्रेनिंग मेथड्स इसमें जीटी एडम्सन और मॉर्गन ने इसको डेवलप किया है. फोटलिक ट्रेनिंग मेथड्स पेलॉफ एस्टन ने डेवलप किए गए हैं. इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स डॉक्टर रेंजिनल क्लेचरस ने किया है. प्रेशर ट्रेनिंग मेथड्स मींस विंटर बॉटम ने इसको डेवलप किया. नाउ द ऑप्शंस देखते हैं. यहां पर अगर ऑप्शन देख रहे हैं, ए में 3 4 1 2 दिया है. नाउ बी में 4 3 2 1 दिया है. नाउ द आंसर इज बी. बी इज करेक्ट. बी में सर्किट ट्रेनिंग फर्स्ट 4 से मैच है. Fartlek's second third से मैच है. Now interval is Dr. Randina Greshles ने दिया है. Last one is Winter Bottom ने इसको डेवलप किया. Pressure type of training. Why it is called as pressure type of training? Pressure training it is developed from one type of pre-competitions. Competition से pre-competitions पहले किए जाते हैं. For example अगर आप देखने जाएंगे क्रिकेट में तो नॉर्मल competitions में पहले प्रैक्टिस मैचेस होते हैं. Why they are practice matches on the same conditions में players को equally pressure कराया जाता है on the basis of different type of pressure training methods. Now next is explosive strength, continuous, post isometric and help to do movements. Now यहाँ पर explosive movements, what is called as explosive movements?
to overcome the resistance with high speed is called as explosive, yani second one. Now continuous training method, it is called as endurance. Post isometric stretch. Post isometric, it is developed on flexibility of effectively and help to do movements. Help to do movements means to overcome the resistance with their high speed. It is called as help to do any movements. Now the answer is B. Now explosive strength is to overcome the resistance with high speed. Now second one is continuous training method, endurance हो गया, post isometric यानी flexibilities हो गया, and help to do movements. It is a part of cognitive abilities methods. Now the answer is B. Now last part of my topic is fill in the blanks. Total fill in the blanks we are given. Microcycle involves the training plans. How many types of microcycles? What is the microcycles I will discuss. Now microcycle training plans are there where the player should be formed, where the particular training schedules should be formed on particular duration. In Olympics, it comes on 4 years. If in national games come in every years, if you've seen in CBSE competition, it should be on 7 or 8 months, or it may be called as 1 year. Now यहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स हमें फॉर्म करनी है तो एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स हम बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप देखने जाओगे, माइक्रो मींस स्मॉलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग, मैक्रो, मीसो एंड माइक्रो टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्लान्स बनाते हैं इन ओलंपिक्स में. नाउ द आंसर इज 1 वीक, मतलब 7 डेज का ट्रेनिंग प्लान हम यहाँ पर डिटरमाइन करें. 1 वीक, 6 to 8 वीक्स, 8 to 10 वीक्स और 1 to 2 वीक्स. यहाँ पर आंसर होगा 1 वीक्स का. 7 डेज का ओनली ट्रेनिंग प्लान्स होंगे. माइक्रो ट्रेनिंग प्लान्स तब बनाते हैं जब एकदम ट्रेनिंग कंपटीशन बिल्कुल नियर अबाउट हो. द ड्यूरेशन ऑफ मीसो साइकिल्स 5 to 10 days, 4 to 6 week, 4 to 6 month और 1 to 2 years. नाउ द आंसर इज 4 to 6 week. पहला आएगा मैक्रो जो एक लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग प्लान है, एंड मैक्रो के अंदर मीसो आएंगे, मीसो के अंदर माइक्रो ट्रेनिंग प्लान आएंगे. माइक्रो मींस 4 years, मैक्रो मींस 4 years. नाउ 4 years के अंदर ईयर ट्रेनिंग प्लान, एवरी ईयर ट्रेनिंग प्लान आएंगे, एंड एवरी ईयर ट्रेनिंग प्लान के अंदर एवरी मंथ ट्रेनिंग प्लान इसमें डिटरमाइंड होंगे. नाउ training plans, it is basically determined on their Olympics, Asian Games, Commonwealth Games, Afro-Asian Games. यहाँ पर प्लेयर्स जो बेसिकली ओलंपिक्स के लिए या कोई हायर परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग्स करते हैं, यहाँ पर से एक डिटरमाइंस मीसो, माइक्रो और माइक्रोसाइकिल ट्रेनिंग प्लान्स बनाया जाता है. Now pushing the wall, the stationary wall, pushing against the stationary wall is the example of eccentric exercise, isometric exercise, isotonic exercise, isokinetic exercise. अगर पुशिंग द वॉल हम कर रहे हैं तो हमारी मूवमेंट्स या मसल का जो स्ट्रेंथनिंग पार्ट है वो कांस्टेंट है. नाउ द एग्जांपल इज, नाउ द आंसर इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जहां पर हम रेंज को नहीं बढ़ाते हैं, स्पीड को नहीं बढ़ाते हैं, बट जो ग्रुप ऑफ मसल्स है उसको हम कांस्टेंट टेंशन में रखते हैं. इट इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. एटिंगर्स एंड मुलेट ने फर्स्ट इसको डिराइव किया गया 1953 में, एंड इसके बाद धीरे धीरे डेवलप होना चालू हुआ. अगर आप वेट लेके खड़े होते हैं, हैंगिंग ऑन द बार होते हैं, कोई एक वेट लिफ्ट लेके 10 सेकंड होल्ड होते हैं, नॉर्मल प्लैंक करते हैं, तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को हम डेवलप कर सकते हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पर वन ऑफ द एग्जांपल शुड बी गिवन ऑन पुशिंग ऑन द वॉल ऑन स्टेशनरी पोजीशन. खड़े स्टैटिक पोजीशन में हमें किसी एक वॉल को पुश करना है इन पर्टिकुलर ड्यूरेशन. इट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. Now incomplete recovery is a vital. Endurance training में एक incomplete recovery part होता है. Continuous training methods, interval training methods, forklift training methods, cross country करते हैं. Now the answer is interval training methods. Interval training methods एक ऐसा training methods है जहाँ पर principles of incomplete recovery आता है. हमारी बॉडी एक नॉर्मल रेंज में आती है, and then again we start that events or training. हमारी बॉडी 120 minutes 120 beats में हार्ट बीट्स में आएगी. अगेन वी स्टार्ट द ट्रेनिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पर्टिकुलर ट्रेनिंग में अगर हम करते हैं तो. नाउ एक्चुअल वेरिएबल इन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स फॉर ट्रेनिंग डिटरमाइंस कौन से होते हैं. फर्स्ट, डिस्टेंस, टाइम, रेपिटेशंस और रिकवरी पीरियड्स. सेकंड, प्रिपरेशन, ट्रांजिशन एंड कंपटीशन पीरियड्स. डिस्टेंस, ट्रांजिशन एंड रिकवरी पीरियड्स.
force, mass and accelerations. Now the answer is distance. कितने distance हम run कर रहे हैं, कितने time में हम कर रहे हैं, कितना repetitions we have to give, and in between repetition how much recovery we have to require. ये सारा एक interval training methods में determine होता है. Now distance and timing both are equally determined. हम कितने fastest हम running कर रहे हैं और हमें हमारी हार्ट बीट्स कितने टाइम में उतना डिस्टेंस कवर कर पाती है. इट इज कॉल्ड एज इंटरवल ट्रेनिंग मेथड. वन ऑफ द इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट रिकवरी. हमारी बॉडी 120 से 180 के बीच में ट्रेवल करती है. 120 हार्ट बीट जैसे ही पहुंचे, अगेन वी स्टार्ट दैट आवर रेपिटेशंस, and recovery should be incomplete, not full recovery we have to give in interval training methods. Now next is speed play. What is speed play? Speed play किसको बोलते हैं? वेट ट्रेनिंग मेथड्स को बोलते हैं, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड्स को बोलते हैं, फॉटलेग ट्रेनिंग मेथड्स को बोलते हैं, या इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स को बोलते हैं. नाउ द आंसर इज फॉटलेग ट्रेनिंग मेथड्स. फॉटलेग ट्रेनिंग मेथड्स वन ऑफ द ट्रेनिंग मेथड्स है जहां पर हमारी बॉडी, हमारे स्पीड मींस एरोबिक और एनारोबिक फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग हम करते हैं. यहाँ पर जैसे अगर हमें थकान लगता है हम वॉक करने लगते हैं, जैसे हमें लगता है कि हम ट्रेनिंग फास्टेस्ट कर रहे हैं तो हम स्लो करने लगते हैं. अगर आपको याद हो तो अभी मैराथन में 2 आवर्स का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ एलॉइड किपजोगे का. उसने क्या किया, उसने मैक्सिमम फॉटलेग ट्रेनिंग मेथड्स उसने डेवलप किया. कीनियन एथलीट्स जो होते हैं वो स्पीड प्ले टाइप ऑफ ट्रेनिंग, फॉटलेग ट्रेनिंग मेथड्स जो ट्रेनिंग होती है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं इसमें. वहां पर वो जब टायर्डनेस लगता है कि अब नहीं हो पाएगी, दे आर डूइंग दैट वॉक. और अगर उनको लगता है कि नहीं हमारी बॉडी बिल्कुल अब परफेक्ट है, दे आर कंटिन्यूअस रन करते हैं. वो 2 आवर्स 3 आवर्स तक वो कांस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं. एलॉइड किपचोगे वन ऑफ द फाइनेस्ट एथलीट्स जो कीनियन एथलीट्स है, जो मैक्सिमम टेंडेंसी में स्पीड प्ले या फॉटलेग ट्रेनिंग मेथड्स को यूटिलाइज करता है इन पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स. Now the basic principles of फॉटलेग ट्रेनिंग मेथड्स, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? वेरिएशन ऑफ पेस, वेरिएशन स्पेस, कोई एक स्पेस हम में ही हम करते हैं, या वेरिएशन ऑफ पेस हमारी पेस को हम जज करते हैं, या वेरिएशन ऑफ ड्यूरेशन हम कोई भी एक ड्यूरेशन को हम जज करते हैं, या एक वेरिएशन ऑफ प्लेसेस. नाउ द आंसर इज वेरिएशन ऑफ पेस. हमारी पेस को हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरोबिक और एनारोबिक फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग्स. Now continuous methods was introduced by, किसने इसको डेवलप किया? डॉक्टर अर्नेस्ट वेनिकन ने, मॉर्गन ने, हेंस रेंडिनल ने, या वल्दिमर ग्लेशियर्स ने? Now the answer is डॉक्टर हेंस रेंडिनल, सॉरी डॉक्टर अर्नेस्ट वेनिकन ने इसको पहले डेवलप किया है 1920 में. फर्स्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड उसने बनाया. ना वहां पर वेरिएशन पेस उसने नहीं बनाया था. फर्स्ट उसने स्लो और फास्ट को डेवलप किया था, और उसके बाद उसने धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करके उसने वेरिएशन पेस उसने लाया. द वेरिएशन पेस फॉरमोस्ट ट्रेनिंग मेथड्स है जो हर एथलीट्स, जो कीनियन हो गया, जमैकेस हो गए, ये मैक्सिमम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड्स में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं. जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग इज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड्स. वेट ट्रेनिंग, interval training methods, or footless training method. It is a type of continuous training method. Before we start our training, we have to do jogging, we have to do simple swimming or cycling. Now cycling and swimming one type of transition periods में हम use करते हैं. For longer swimming करते हैं, longer cycling करते हैं, longer distance में use करते हैं, and it is a type of continuous training methods के अंदर भी determined होते हैं. Now ability to overcome the resistance under the condition of fatigue. ऐसा रेजिस्टेंस जहां पर हम काफी देर तक हम मसल्स को स्ट्रेच आउट कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, और इट इज कॉल्ड एज नन ऑफ अबव. ये तीनों के अंदर नहीं है. ना अगर आप देखने जाओगे एक्सप्लोसिव, मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, इट इज अ टाइप ऑफ डायनामिक टाइप ऑफ स्ट्रेंथ. ना यहाँ पर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, इट इज under the condition of high speed, ये नहीं होगा. Maximum strength है to overcome the resistance under the one single contraction, ये भी नहीं होगा. Now strength endurance होगा because we are doing that work under the condition of fatigue. It is called as strength endurance. In strength endurance, it is a part where the weightlifter they are doing, where the throwers are doing,
where the volleyball players are doing strength endurance because they are doing constant jump, constant throwing, constant weightlifting. In continuous training methods, the rate of heartbeats remains in between beats per minute. कौन से beat per minute के हम नॉर्मल एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर 120 टू 130 टू 140 120 टू 140 beats 100 टू 110 या तो कौन से में फाइनल आएगा नाउ द आंसर इज 120 टू 140 beats that is a combination of aerobic metabolisms or anaerobic metabolism यहाँ पर कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड्स में स्लो फास्ट और वेरिएबल पेस होंगे जहां पर हम कोई भी एक एथलीट्स या कोई भी एक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए 120 टू 140 बीट्स पर मिनट में कांस्टेंट रनिंग कर सकते हैं नाउ द डिस्टेंस और ड्यूरेशंस भी डिटरमाइन होंगे कितनी देर उसमें और कितने डिस्टेंस में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर एग्जांपल हम 10 किलोमीटर कर रहे हैं 12 किलोमीटर कर रहे हैं स्लो पेस में कर रहे हैं नॉर्मल जॉगिंग में कर रहे हैं या पर्टिकुलर ड्यूरेशंस को लेके कर रहे हैं या 1 आवर्स कर रहे हैं 12 more than 1 hours कर रहे हैं determined on slow and fast type of continuous training methods. But the last question for throwing the javelin its needs किसके अंडर में आएंगे throwing the javelin is explosive strength, maximum strength, strength endurance या speed endurance. Now the answer is explosive strength. कोई भी एक पर्सन javelin throw को थ्रो करते हैं कांस्टेंट एक पर्टिकुलर रेंज में पर्टिकुलर स्पीड में थ्रो कर रहे हैं इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ थैंक यू फॉर लिसन मी Thank you so much, Praveen sir. And definitely it was a wonderful session and students will get benefit from this session and chapter 10 के उनके जो भी questions होंगे जो भी doubts होंगे और definitely chapter 10 से जो भी questions उनके सिलेबस में होंगे जो भी उनके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली दे विल बी एबल टू अटेम्प्ट द करेक्ट आंसर और बहुत अच्छी तरह से आपने सारे जो भी एस्पेक्ट्स से उस पर्टिकुलर चैप्टर्स को आपने लिया है 1 मार्क सोल्यूशन की तरफ से और सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन और यहाँ पर आप आए आपने एक प्रेजेंटेशन ये दिया निश्चित रूप से इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारा टाइम लगता है बहुत सारे साथी हमारे और भी हैं जो इस तरह के सेशन एज ए रिसोर्स पर्सन ज्वाइन करना चाहते हैं 1 मार्क सोल्यूशन को वो हमको लिख सकती rate@gmail.com पर एंड अभी मैं फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ आप फीडबैक फॉर्म को जरूर फिल कर दें I think there is some technical issue. Yeah, just wait a minute.
Someone has wrote, I would like, I request One Mark Solution to create a official WhatsApp group for updates. There is a official group of WhatsApp is already there. So you can put your number, or you can give a request to my number, that is 96. I'm writing my number. You can send a message, WhatsApp message. I will add you. Email ID is one marks solution @gmail.com, and our mail ID number is 9662592407. तो आप इसको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. यू कैन राइट अस वन मार्क्स सोल्यूशन @gmail.com and 9662592407. This is the official number and official email ID of One Mark Solution. You can, if you want to be a resource person, you can write us, and if you want to be added in One Mark's official group, you can give me a message. Thank you so much. Thank you, Praveen sir, for being with us, and I hope in future definitely you will be with us in the other webinars. Thank you so much. Thank you, one and all.